बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लोग आए हैं रनवे पार्क और आज हम कंकॉर्ड का विज़िट करने जा रहे हैं। यहाँ पे रिसेप्शन में हम लोग अंदर जाएंगे। जी हमने टिकट ले लिए हैं और अभी हम वेटिंग लॉन्च में जा रहे हैं। यस, हमें कंकॉर्ड में बोर्ड होने से पहले सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है ताकि जो है बच्चे भी अपना बच्चों के साथ जो लोग हैं वो ख्याल करें। माशाल्लाह हम हैंगर के अंदर आ गए हैं। वाओ, अमेजिंग, फाइनली। So for those of you who are unfamiliar with this aeroplane, जी व्यूअर्स, अभी हम इसके अंदर बैठेंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ताला ने मौका दिया है कंकॉर्ड के अंदर बैठने का। There we go. thank you very much. Cheers, thank you. Where's your ticket, sir? Hello sir, how are you? I'm just radiant, thank you. I'm good, thank you. Hello, welcome on board. Gentlemen, welcome on board. What do you think? It's tiny. It's not Ryanair, is it? Delighted to say. So as I mentioned earlier, this is essentially a 70-year-old commercial airliner. This was one of 7 aeroplanes that were operated by both British Airways and Air France. So Air France had 7 and British Airways had 7. Of the 7 that we had, this is the most famous. This is the flagship of our fleet. It's still the property of BA. The primary route for both airlines, in the case of Air France, was between Paris and New York, and in the case of British Airways, London and New York. Now today, if you flew on a modern 787 Dreamliner, or perhaps an Airbus A350 to fly from London today. व्यूवर्स, ये बता रहे हैं कि इस एयरक्राफ्ट का टिकट जो था वो 15,000 पाउंड था उस वक्त, और स्पेशली जिस सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ, इस सीट पे माइकल जैक्सन बैठा करता था, उसकी ये फेवरेट जगह थी। This aeroplane flew so high and so fast that we didn't do any of that nonsense. There were 4 supersonic routes and they never changed. And before he left the aeroplane for the very last time, he wrote on the back of the flight deck door, it's still there in felt tip pen, "Be good old girl, we had good times together." So
was quite poignant, really. Anybody got any questions? No? Sorry, say I just want to share a small about. I remember in 1998, Yes. I was in Saudi Arabia in Jeddah, Yes. so I was big fan for the you Concorde. No, I'm born there. Oh, okay. So then my brother was working on the airport and he told me the Concorde is coming, the British Airways. So I rushed to the airport. I've been to the airport to see nearby view, but unfortunately it's takeoff. Oh, right. And I was crying that time. Oh, that's But after that, now today I got the opportunity to visit this airport. It's a very big day for me. This gentleman saying he was in Jeddah in Saudi Arabia when the Concorde came in. Now that wasn't one of our scheduled services, though I suspect that was either a diplomatic or a royal flight. But the aeroplane was very distinctive. It's, as I said, it's 70 years old. It's very primitive. Now, you know when you watch the news today, you see a fighter jet getting airborne with a great big sheet of flame out of the back of the engine. It's called reheat or afterburner. And this aeroplane employs the same system. So when we line up on the runway, say at Heathrow, weighs 188 tons, of which 98 tons is fuel. So we line up on the runway, we're clear for takeoff, the cabin's secure. Everybody happy? Right, let's go. On the afterburners, you get the thrust levers. 3, 2, 1. Now push these open. 4 50-foot sheets of flame appear out of each engine. The aeroplane weighs 188 tons and can accelerate from a standing start to 300 miles an hour in 90 seconds. Within 90 seconds you'll be passing 3 or 4,000. कमेंट्री जो है वो ख़त्म हो गई है और मैंने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है बचपन का। मैंने सबको बताया है कि मुझे कितना शौक़ होता था इस जहाज़ को देखने का और मैं इसको देखने के लिए एयरपोर्ट तक चला गया था और आज तकरीबन 22-23 साल बाद अल्लाह ताला ने मौका दिया है इस जहाज़ के अंदर बैठने का। अल्हम्दुलिल्लाह। Because like £6. Oh yeah, but they are. व्यूअर्स, ये कंकोर्ड है सुपरसोनिक, मेरा ख्वाबों का जहाज़। बचपन में मैं इसको तरसता था देखने के लिए। आज अल्लाह ताला ने मौका दिया है करीब से इसको देखने का। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये इसके बैक साइड पे जेट इंजन है। ये आगे से कंकोर्ड की आप नोक देख सकते हैं, ये नीचे होती है। जब ये टेक ऑफ लैंडिंग कर जाता है तो यहाँ से ये नीचे हो जाती है। जैसा कि गाइड ने बताया है कि ये मुसलसल लंदन से न्यूयॉर्क परवाज़ करता रहा है ब्रिटिश एयरवेज़ का जहाज़, और ये तकरीबन 2003 से यहाँ पे खड़ा है, जब से जो है ग्राउंडेड कर दिए थे तमाम कंकॉर्ड्स। तो अब ये म्यूज़ियम में ही खड़ा है। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की
वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बड़ी स्पेशल थी मेरे लिए आज बनाना, और मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था कंकॉर्ड को देखने के लिए, और आज अल्लाह ताला ने मौका दिया है कंकॉर्ड का व्यू करने का। तो वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।